कल मेरे को फ़ोन आता है कि सर माई फ्रेंड फ्रॉम अ टॉप MBA कॉलेज. कौन सा कॉलेज? अब B ग्रेड कॉलेज है, नॉट टॉप कॉलेज, मतलब लाइक KJ सोमाया, विलिंकर, और इफ़ आई टेक दैट रेंज IMT गाजियाबाद ले लो. ही गॉट अ 30,000 का पैकेज. ही वॉज अ सिंसियर गाय. वो तो पहले बोल देगा, ऐसा नहीं कोई वो चंपू चंपू नहीं था. ही वॉज अ सिंसियर गाय. ऐसे कैसे हो गया? तो तो आपने MBA को समझा क्या हो? पहले तो मेरे को ये बताओ, व्हाट यू थिंक ऑफ एन MBA? यू थिंक, इफ़ यू थिंक बॉस MBA इज़ अ मैजिक वॉन्ड, MBA कर लिया तो जय माता दी करके तुम्हें टॉप जॉब मिल जाएगा, भैया ऐसी बात नहीं है. फाइन. In any B school, let it be IIM Ahmedabad, let it be Jamal Bajaj, last 10% of batch or last 5% of batch always get a low quality job. ठीक है, तो आप for example, college have a average salary as 10 lakhs. 10 lakh is a very good package. But वहाँ पे जाके भी last का बच्चा जो होगा ना, end का बच्चा, उसको low package ही मिलने वाला है. ठीक है, तो and this is very very common. Okay, so हाउ टू अवॉइड दैट? ट्राई टू बी इन द टॉप पर्सन. अभी आपने बोला वो सिंसियर था. हमें सिंसियर नहीं, हमें स्मार्टनेस चाहिए. MBA इज नॉट अबाउट सिंसियरनेस. MBA सिंसियरिटी. MBA इज अबाउट योर पर्सनैलिटी. वंस यू जॉइन द B स्कूल, यू आर गेटिंग 2 years का टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ. तो प्लीज़ वहाँ जाके अपने आप को इम्प्रूव करो, सो दैट यू कैन गेट द टॉप जॉब फ्रॉम द कैंपस, और एटलीस्ट बी द एवरेज. ओके, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, B schools which have taken the intake of more than 500. ठीक है, यहाँ प्रॉब्लम यार, IIMs आर स्ट्रगलिंग. दोज हु हैव मोर देन इंटेक ऑफ मोर देन 500, लास्ट 20% ऑफ द बैच, लास्ट 10% ऑफ बैच, लास्ट 50 बच्चों को प्लेस करने में जान निकल जाती है. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग प्लेस नो, दे गेट प्लेस्ड, बट इट्स देयर स्ट्रगल इन्वॉल्व्ड फॉर द प्लेसमेंट कमेटी आल्सो टू प्लेस देम. सो दैट इज ट्रू फॉर एवरी कॉलेज. फाइन. सो यार मम्मी ने कहा था ना कि एक बार 10th पास कर लो, देन लाइफ इज सेट. फाइन, दैट इज नॉट ट्रू इन लाइफ. Life में struggle is everywhere. It's a different type of struggle at a different stage. For example, getting in the engineering college was struggle number 1. But getting a job from engineering college or passing out from engineering college with a good percentile is another struggle. Same way MBA as well. Getting the MBA is struggle number 1. Yeah, you have to prepare for maths, verbal, logic, all these things. Then getting the placement from the campus is the second struggle. But that's more interesting because you have to work on your personality. You have to just build your personality. Okay, which anyone can do, which you and me can do, Ram say. So once you join the B school, whichever college you are joining, make a thumb rule. Whatever the average salary of that package, you have to get a package above that. Improve yourself, participate in as many institute as competition as possible, so that you can get the top job. Okay, so if I talk a college like Goa Institute of Management, TAPMI, Willinkar, KJ Somaya, take another example. The top 20% of batch, top 20% will get a salary at par with maybe MDI, yeah, maybe IT Kharagpur, maybe new IIMs. Yes, top 20% of batch. I can give you example. I can give you the name of the students who have got an international placement from V school. People who have got consulting firm from KJ Somaya. People who have got into Ernst & Young from Goa Institute of Management at TAPMI. Okay. And once they join the company, they have people from new IIM, Sydenham sitting next to them. Top 20% of the batch will get the high quality job. 60% of the batch will get an average placement, which is written on the site. Okay, like 8 lakhs, 9 lakhs or 10 lakh ka package. Last 20% of the batch go to any B school, will give you 30,000, 35,000, 40,000 ka package. Okay. One more point is there. Now, इसके friend को ना via खबर मिलती है. Okay, now you are preparing for MBA, all your friends are preparing. One of your friends have done his MBA from a top good college. KJ Somaya is a good college. Willinkar, going sort of management, TAPMI are all good college. Then बाकी की जर्नी शुरू होती है. He might have told one of the friend, यार I got a low package. ठीक है, उसने फिर 30,000, 25,000 ऐसा बोल के आगे बात फैला दी. That is also possible. ठीक है, तो don't look at what others are doing. What you are doing is more important. Okay. नीरज चोपड़ा को गोल्ड मिल गया, भाई तुझे क्या मिला? अपने बारे में सोचा ना. यू आर लुकिंग एट द नीरज चोपड़ा इज गोल्ड, दैट इज अ हाई लेवल. फाइन. सेम वे इफ यू वांट टू कंपेयर, देयर आर पीपल स्लीपिंग ऑन द स्ट्रीट्स, या विदाउट एनी क्लोथ्स, विदाउट एनी प्रॉपर फूड. अब उनसे भी कंपेयर क्यों नहीं करते अपने आप को? फिर अब तो ऐसे मत एग्जाम्पल लेके चलो. आप अपने बारे में सोचो, हाउ मच यू कैन डू.
Your target is very simple. Once you join the B school, to be above average. And once you're preparing for the exam, na, तो ये negativity मत लेके जाया करो यार. Please, that's my request to you. If you can see a person getting 30,000 from KJ Somaya, will incur, going through the management, why can't you imagine a person getting a 14 lakh package in Nestle, PNG, same college? उनका example लेके चलो ना. ठीक है? Stay positive. That's all I want to say. Stay motivated. All the best.